pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Algae we have already completed. There are three types of algae, that is chlorophyceae, rhodophyceae, and phaeophyceae. They are called green algae, brown algae, and red algae. And we have discussed all about the algae and how they are different, what are the different habitat, what kind of sexual reproduction, what are the difference in them. We have discussed in algae. This is a overall comparison of the algae. And the next is bryophytes. Bryophytes, they are called amphibians of plant kingdom. Amphibians are called amphibians are called amphibians of plant kingdom. Why we call them amphibian of plant kingdom? Because they can live in soil but need water for sexual reproduction. As you know, that algae, the algae, the habitat is, if you remember the habitat, they are mostly uh, aquatic. Algae are mostly aquatic. They are chlorophyll containing, simple thalloid, autotrophic, and aquatic. But here the bryophytes, they are little bit more advanced, more differentiated than algae. They can also live in the soil, but they need water for sexual reproduction. They occur in damp, humid, and shaded localities. Bryophyte, the body is more differentiated than that of algae. Algae की जो body थी, if you remember, it is thallus shape. It is without differentiation. Here, the body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect, and attached to the substratum by the either unicellular or multicellular rhizoids. Unicellular rhizoids you will find in the case of liverworts and mosses. You are having the multicellular rhizoids, because in the bryophyte there are two types further division: liverworts and mosses. This is the structure of moss. They don't have true root, stem or leaf. जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, बट दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. एंड द मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, जैसे एल्गी में थी, वो क्या है? हेप्लॉइड, हेप्लॉन्टिक. इट इज ए इट प्रोड्यूस गैमेट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेट प्रोड्यूस करती है. गैमेट्स आर हेप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड. दे प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस and hence they are called gametophyte. The main plant body is gametophyte. You can see the sex organ in bryophytes are multicellular. We are discussing about the sexual reproduction in bryophytes. The sex organs are multicellular. Male sex organ is called antheridium. It produces biflagellate antherozoids. Just like in humans, we are having sperms. So in plants, we are using the term antherozoid. And the female sex organ is called archegonium. It is flask shaped and it produces single egg. Generally, the male gametes are small, female gametes are larger. Male gametes are many in number. They are as compared to female gamete. Female gamete is only one. Male gametes are many. You know, in the first chapter we have studied that why nature has given this kind of thing, because during pollination or during the transfer of male gamete to the female gamete, so there are chances of loss, chances of damage. So that's why nature has given more number of male gamete as compared to the female gamete. So the bryophytes, the body is more differentiated, do you know that? And the sex organ is antheridium. Uh, Male sex organ is antheridium, and female sex organ is called archegonium. And the sexual reproduction in the antherozoids, they are released into water and they meet archegonium. The archegonium is having the egg,
and the antherozoids, when they release into water, they come in contact with archegonium, and fertilization occurs inside the archegonium. The egg secretes a chemical which attracts the spermatozoa, or or you can call antherozoids. Okay, so the zygote will form when the sperm fuse with the egg. It produces diploid zygote, and zygote do not undergo meiosis or do not undergo reduction division immediately. Instead, they produce a multicellular body. It is called sporophyte. Okay, gametes bane. Gamete, main plant body is gametophyte. They will produce male and female gamete. Male female gamete जब आपस में फ्यूज हुए, they will form a zygote. Zygote एकदम से डिवाइड नहीं हुआ. Zygote में कुछ टाइम बाद zygote डिवाइड नहीं हुआ. Zygote multicellular body बना ली zygote ने through mitosis. It will form a sporophyte. अब इस sporophyte is not free living. जो sporophyte बना, it is a dependent sporophyte. This sporophyte is not free living but attached to the gametophyte. That gametophyte is photosynthetic and it takes nourishment from the gametophyte. Okay, that's why we call it as saprophytic. It is a parasitic, sorry. It is a parasitic kind of nutrition. This sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nutrition from the gametophyte. And after that, some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to form the gametophyte. That is alteration of generation. Because in the plants, alteration of generation is there. Haploid will form the diploid, like gametophyte will form the sporophyte, and sporophyte will form the gametophyte. Just like day after day, night is there, then after night, day is there. तो देर अल्टरनेट, दिन और रात जैसे अल्टरनेट होते हैं, दिन के बाद रात होगी, रात के बाद दिन होगा. ऐसे ही जो प्लांट्स में गैमेटोफिटिक स्टेज के बाद स्पोरोफिटिक और स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक, पहले हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड. तो दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. मेन प्लांट बॉडीज में क्या है? हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड से गैमेट बनते हैं, गैमेट से फ्यूज होके जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट विल नॉट डू division just after the formation. It will, for some time, it will divide, it form a multicellular body, and it is called sporophyte. And that sporophyte is not free living, and it is parasitic in nature. It is parasitic in nature because it will take nutrition from the main parent body, that is gametophyte. Okay, now the importance of economic importance of this bryophytes. They are used for food for herbaceous mammals, birds, and other mammals. Some species of mosses provide peat that have long been used as a fuel. It has capacity to hold water as a packing material for transshipment of living material. And mosses, along with the lichens, are the first organism to colonize rocks. They also help in the biological succession, and they decompose rocks. Uh, making the substrate suitable for the growth of higher plants. जैसे मान लो रॉक्स हैं, रॉक्स पे एकदम से कोई हायर प्लांट तो नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि प्लांट्स की रूट होती है, इनके पास तो रूट नहीं है. दे आर हैविंग राइजोइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर. तो ये क्या करते हैं? मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. ये रॉक्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके उसमें फिर इस तरह से एल्गी और जो ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये स्मॉल प्लांट्स की तरह, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है डोर्सो वेंट्रल होती है, फ्लैटेंड बॉडी है, प्लेट लाइक बॉडी है. ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है. तो ये मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि इनके ऊपर दूसरे प्लांट ग्रो कर सके, हायर प्लांट्स, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. अब एक मेन जो प्लांट है, जो बहुत बड़े प्लांट है, वो डायरेक्ट ग्रो नहीं कर सकते ना रॉक्स पे. तो दैट्स व्हाई दे आर हेल्पिंग इन द प्लांट सक्सेशन. ओके, एंड दे आर आल्सो फॉर्म ए डेंस मैट. They reduce the impact of falling raindrops and thus prevent the soil erosion. They can also having the medicinal properties like Marchantia.
to cure lungs and liver infection. It is also having the anti-tumor effects also. ठीक है? So these are the some properties of bryophytes. Economical importance. Bryophytes do not attain great heights because they don't have vascular bundle. Bryophytes में vascular bundle नहीं होते. They may range from 0.4 to 70 सेंटीमीटर. इनकी जो हाइट है वो 0.4 से 70 सेंटीमीटर तक होती है. एंड मोस्टली दे आर हैविंग थैलोइड प्लांट बॉडी. इसमें रूट्स नहीं होती, राइजोइड्स होती हैं. वैस्कुलर बंडल नहीं होते. क्यूटिकल इज नॉट प्रेजेंट ऑन द पेरेंट प्लांट बॉडी. क्यूटिकल इज नॉट देयर. एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू. मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते. और मेल गैमेट नीड्स टू स्विम अप टू द इंटीरियर ऑफ आर्किगोनिया. फीमेल गैमेट उसके लिए वाटर की जरूरत होती है. इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्री होते हैं. दे आर नॉट अटैच विद द पेरेंट बॉडी लाइक they are dehiscence. So what there are two type of bryophytes. One is liverworts and another is mosses. liverworts क्या होते हैं? इनकी शेप लीवर जैसी होती है. They are also called hepaticopsida. They usually grow in moist, shady places such as bank of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The main plant body is thalloid. Just example is Marchantia. The thallus is dorsoventral and closely pressed to the substrate. आपको दिख ही रहे हैं. They don't have height. The body is dorsiventral flattened, and if they are having leaf, the leafy members have tiny leaf-like appendages. They have leaf life. They don't have true leaf, and they are in the two rows on the stem-like structure. Rhizoids. इनमें जो rhizoids होते हैं, in liverworts में they are unicellular. They may be two types. In some liverworts, like smooth-walled or tuberculate, reproduction occurs both asexual and sexual method. Asexual is by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gyma. In this liverworts, the asexual reproduction is occurs by either by fragmentation of thalli or by the formation of gyma. Gyma or singular you can say gyma or gymi. Gyma are green multicellular asexual buds which develop in the small receptacle called gyma cups that is located on the thalli. That you can see the gyma or gyma cups. They just detach from the parent body. These gyma become detached from the parent body and germinate to form the new individual. So that is asexual reproduction because there is no formation of gamete. This is asexual reproduction. We are discussing the liverworts. In sexual reproduction in the liverworts, it is accomplished by the formation of male and female gamete. Male and female sex organs are present either on the same or different thallus. The sporophyte develop from zygote. देखो इसमें क्या है, गैमेट्स बने, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट फीमेल के पास गया थ्रू वाटर, जाइगोट बना. जाइगोट एकदम से डिवाइड नहीं हुआ, मल्टी सेलर उसने पहले उसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस होकर उसने क्या बनाया, स्पोरोफाइट बॉडी बनाई. एंड स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट व्हिच कंटिन्यूज टू ग्रो ऑन गैमेटोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल. जो स्पोरोफाइट है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड हो गया. एंड आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी, द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. जो आपको ये स्ट्रक्चर शुरू में देखी थी आपने, this one is an example of mosses. You know that sporophyte is dependent on the gametophyte. Gametophyte means it is having a haploid body. Main plant body is haploid. Haploid body में gametes बने, gametes से फ्यूजन होके जाइगोट बना, जाइगोट मल्टीपल हुआ, मल्टीपल डिवीजन हुआ, इसमें स्पोरोफाइट बना. और स्पोरोफाइट क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुआ फूड, सीटा और कैप्सूल में. और फिर कैप्सूल के अंदर क्या हुआ, स्पोर्स बने. कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस से स्पोर्स बने और वो स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट हुए और उन्होंने गैमेटोफाइट बनाया. तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहा है और गैमेटोफाइट ही स्पोरोफाइट बना रहा है. ठीक है,
gametophyte से sporophyte, sporophyte से gametophyte. This is called alteration of generation. And here the sporophyte which is diploid, it is not independent, it is dependent on the gametophyte for the nutrition. ये तो हमने बात की लीवर बर्ड्स की. लीवर बर्ड्स के बाद हमारे पास आए मॉसेस. ठीक है, लीवर बर्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद गीमा कप्स के थ्रू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, दैट द स्पोर जर्मिनेट. ओके, इसमें जो प्रीडोमिनेंट फेज है लीवर बर्ड्स में, the predominant stage of the life cycle of mosses, now we are discussing the mosses, is gametophyte. Gametophyte is a predominant stage. Okay, it consists of two stages. Now we are discussing the moss. First we have discussed the liverworts. There are two type of bryophytes, one is liverworts and other is mosses. Mosses are little bit they are comparatively more longer, they are radial symmetry, and liverworts are having the dorsiventral, they are radial symmetry, and they are having the multicellular rhizoids, and the juvenile proteinema stage is present. So you can see here that gametophyte is having the proteinema stage and leafy stage in the case of moss. So what is proteinema stage? It develops directly from the spore. Spores कहाँ बने थे? कैप्सूल में. ठीक है. Now we are discussing about the which stage, that is gametophytic stage. The gametophytic is having two, proteinema and leafy. तो मैंने बताया था अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. तो स्पोर्स कहाँ बने थे? स्पोर्स बने थे स्पोरोफिटिक में. स्पोरोफिटिक में क्या था? तीन चीजें थी, फूड, सीटा और कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर क्या बने थे? स्पोर्स. कैप्सूल में मियोसिस हुई, स्पोर बने. स्पोर्स आर हैप्लॉइड. व्हेन दे स्पोर्स जर्मिनेट, they develop this proteinema stage develop directly from spore. It is a creeping green branch and frequently filamentous stage. उसके बाद क्या हुआ? leafy stage आई. It develops from the secondary proteinema as a lateral bud. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. यहाँ पे जो leafy stage है वो अटैच है सॉइल के साथ. इसमें multicellular rhizoids हैं. And these stage bears the sex organ. Proteinema stage में नहीं थे. Leafy stage में क्या है? Leaf like structure है, sex organs आए. और फिर इसमें तीन तरह का reproduction है, vegetative, asexual और sexual. Vegetative is by the fragmentation in the secondary proteinema. The second one is sexual reproduction. In sexual reproduction, the antheridia and archegonia are produced in the at the apex of the leafy shoots. Apex मतलब सामने की तरफ इनके पॉइंट पे. After fertilization, zygote develops into the sporophyte, having food, seta, and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than in the liverworts. That's the difference. The sporophyte is in mosses is more elaborate than in the liverworts. The capsule contains the spore, and spores are formed after meiosis. और यही spores दोबारा जाके बनाएंगे क्या? गैमेटोफाइट बनाएंगे, प्रोटीनीमा बनाएंगे. यही स्पोर्स आगे क्या बनाएंगे? प्रोटीनीमा. और प्रोटीनीमा से फिर क्या बनेगा? लीफी स्टेज. तो mosses have an elaborate mechanism of spore disposal. So these are the structure of mosses. ठीक है? These are the examples. So next is pteridophytes. So if you have any question, you can ask, or I will start little bit more about the pteridophytes. Then I will give you the last 10 minutes for the discussion. I will continue up to 12 o'clock. ठीक है? The pteridophytes is the next category in the plant kingdom. They are found in cool, damp, shady place, and some flourish well in the sandy soil condition. Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess the vascular tissue. यहाँ पे क्या होगा? जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट बने जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल था, जाइलम और फ्लोएम. वी आल्सो कॉल्ड दैट क्रिप्टोगैम्स.
They are the primitive seedless vascular plants. They are having true root, shoot और leaves. यहाँ से स्टार्ट हुई है ट्रू रूट, लीफ और शूट्स. इनके पास क्या है, इनकी जो मेन पेरेंट प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है. अब तक जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या था, मेन पेरेंट बॉडी इज गैमेटोफाइट. हियर द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. ठीक है. एंड दिस स्पोरोफाइट बॉडी इज इनकंस्पिशियस इंडिपेंडेंट. वहां तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी, यहाँ बॉडी क्या है, इंडिपेंडेंट. यहाँ पे इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स एंड with Anthridia and partially embedded Archegonia, and the term pteridophytes was coined by Haeckel, and about 13,000 species of pteridophytes have been reported, and they are the first land plants evolved around 450 to 500 million years ago, and they are found, I told you, the plant body is from a fraction of centimeters like Azolla to 20 meters. Even की height 20 meters तक है maximum. In fern tree like Angiopteris, ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते, 20 मीटर्स तक होते हैं, फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर्स. मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीफ. यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आ गए हैं, वैस्कुलर बंडल आ गए हैं. दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. These organs having well differentiated vascular tissue like xylem and phloem. The leaves are small, they are called microphylls, and some are having the large, they are called macrophylls. स्मॉल किसमें है, चैलिजिनेला, और लार्ज किसमें है, फर्न्स, डिप्टोप्टेरिस में. इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई है, दे आर यूज फॉर फूड फॉर एनिमल्स. दे आर ऑल्सो हेल्प इन द सॉइल इरोजन. दे आर यूज्ड फॉर स्क्रैबिंग एंड पॉलिशिंग. दे आर यूज्ड एज ए symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria. They are used as antihistamine, producing antihistamine drug, medicinal property. Roots of Adenantum can use cure throat infection. Lycopodium is used in treatment of rheumatism, that is disorder of lung and kidney. Fern are also grown as ornamental plants, जो घर में अच्छे सुंदर खूबसूरत लगते हैं, for their graceful plant body. इनमें जो vascular bundles हैं, they possess xylem and phloem throughout their body. Xylem consists of tracheids and phloem is made up of seed cells, and they are also having albuminous cells. The sporophytes, they bear the sporangia that are subtended by leaf-like structure. It is called sporophylls. And in some cases, the sporophylls may also form distinct compact structure. It is called storobelli, that you can see in the case of gymnosperm. You can go to Himachal, you will see the pine trees. In pine, you will see the storobelli or cone-like structure. And in this also, in some cases like Shalaginella, Equisentum, they are having the cone-like structure. The sporangia produce spores by meiosis in 4 mother cells. Actually क्या है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, that is sporophyte. Sporophytic मतलब कि diploid, and these produce this. इन प्लांट्स में क्या होता है, स्पोरेंजिया होते हैं. जैसे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जिनसे बनते हैं उन्हें बोलते हैं स्पोर मदर सेल. एंड दी स्पोर्स, और यू कैन से द गैमेट्स, we are discussing about these spores are found by the meiosis because the main parent body is diploid. The spores germinate to give inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thyroid gametophyte. It is called prothallus. You can see the structure of prothallus. ठीक है. यहाँ पे in majority of the pteridophytes all the spores are of similar kind. They are called homosporous. कईयों में 2 काइंड के बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोस्पेरस. ये देखो, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोथैलस. This is structure of prothallus. Okay.
In this prothallus, you can see the archegonia and the antheridium. एंथ्रीडियम में एंथ्रीजोइड्स बनेंगे और आर्कीगोनिया में एग सेल बनेगा. मैं आई विल डिस्कस यू टुमारो इन डिटेल अबाउट द टेरिडोफाइट. आप ये देख रहे हो, द मेन पेरेंट बॉडी स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट स्पोरेंजियम में स्पोर बने थ्रू मियोसिस. दे ग्रो. When they grow, they form spore forming. They start to grow, they form the gametophyte, that is prothallus. And when they gametophyte, they are having two type of sex organ. They will produce sperm and egg. Sperm reach the egg via water, and then they produce the embryo, and that the zygote will form the main plant body, that is the sporophyte. Okay, so now you can have ask the question from the please allow the students to ask the question in the bryophytes and pteridophytes. Sir, allow the students